Hey guys, welcome to my channel. मैं हूँ साची और आप देख रहे हो साची's क्रिएशंस। So आज मैं I'm back. Actually अभी ना मैं वीडियोस इसलिए नहीं डाल पाई थी क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी भी आई थी। उसके लिए मेरी दोस्त ये चैनल पे वीडियो आने वाली थी, हम दोनों के साथ में हमने वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम हम एक्चुअली बार बार कार स्विच हो गई, देन हमें कहीं बाहर भी जाना पड़ा, उसके वजह से हमारी वीडियो नहीं बन पाई थी। और मैंने अपने चैनल पर वीडियो डालने को तो बोल दिया होगा, पर नेक्स्ट अभी ये जो चल रहा है ना, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। एग्जाम्स आ गए थे, मेरा येस्टरडे भी एग्जाम था, फ्राइडे भी एग्जाम पड़ गया, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई। मुझे प्रिपेयर भी करना था क्योंकि संडे विसर्जन था, अगर ये सैटरडे प्रिपेयर, सैटरडे वीडियो नहीं डालता इसलिए। अभी कल के बाद थर्सडे को होगा शायद, तो अभी नहीं कर, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो। तो आज हम कर रहे हैं लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। ये भी मेरे एफएलईज का एक पार्ट है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी से है ये। अभी मैं पूरा चैप्टर वाइज नहीं जा रही हूँ, हमारा वैसे स्कूल में ज्यादातर भी चैप्टर वाइज नहीं होता है। ये वीडियोस के बाद ही मैं चैप्टर वाइज लाऊंगी। ओके, तो अभी आई वांटेड टू से दैट ये जो होता रहेगा आगे, एक और चैप्टर है, यहाँ पे 3 चैप्टर्स हैं, तो आज मैं कवर कर रही हूँ 2 चैप्टर, दैट इज बिहाइंड द ब्लैक डोर एंड साइंस ऑफ डी। ये दोनों आज हम करेंगे। साइंस ऑफ डी एक पोम, तो हम ये दोनों कंप्लीट करेंगे। एंड शायद मेरी एक और वीडियो है, वो भी इंग्लिश ग्रामर की। ओके, ग्रामर में भी मुझे एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी। मैंने अभी फर्स्ट टॉपिक होता है हमेशा से नाउन, तो मैं नाउन से शुरू करूंगी, बट शायद मैं एक दो टॉपिक्स मिस करवा दूँ क्योंकि मेरे को दूसरों के लिए भी प्रिपेयर करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एक सेकेंड, मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ। ओके, आप सोच रहे हो कि मेरी कौन सी बुक है, तो मैं आपको यहाँ से शो भी कर दूंगी। ये है मेरी इंग्लिश की बुक, ये रचना सागर वाली बुक है। आप देख पा रहे होंगे, यही है मेरी बुक, एक्चुअल बुक यही है मेरी। तो अब मैं जूम अप कर रही हूँ, टुगेदर विद एक्सप्रेशंस, मेरी बुक का नाम। सो लेट्स स्टार्ट। एक सेकंड, मैं अपनी वीडियो को थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट अप कर रही हूँ। ओके, तो हमारा चैप्टर है बिहाइंड द ब्लैक डोर। ये सेक्शन बी का सेकंड चैप्टर है, इसी के बाद का चैप्टर होगा हमारा साइंस ऑफ डी। तो मैं बुक को भी बंद कर दूँ। Reads a story about a village which had a hidden monster. The village children saw and reported about it, leaving the adults puzzled and disturbed. Okay, तो इसका मतलब है कि ये स्टोरी है, एक गांव के ऊपर ये स्टोरी है, जिसके जिस गांव और उस गांव में एक छुपा हुआ मॉन्स्टर था। किसी को पता नहीं था इस मॉन्स्टर के बारे में। फिर जो विलेज के बच्चे थे, जो उस गांव के बच्चे थे, उन्होंने देखा देखा उनको नाइटमेयर्स आए और उन्होंने अपने पेरेंट्स को बता दिया। अपने पेरेंट्स को बता भी दिया, बट अब जो अडल्ट्स हैं वो डिस्टर्ब्ड हो गए, यानी उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। लाइक पजल्ड माइंड होता है ना, वैसे हो गए। Read English reading skills. ओके, आज ये होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पार्ट एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट, पार्ट 1 ऑफ दीज 2 चैप्टर्स। इसके बाद मैं इनके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी, अभी नहीं करवा रही, वो शायद से मेरी नेक्स्ट 3 वीडियोस भी आ सकती है। One day, Roger's mother told him that she and his father needed to go away for a few days on a business trip, and
did ask Roger's Aunt Betty to look after him while they were away. एक दिन रॉजर की जो मम्मी है उन्होंने बोला कि रॉजर और उसके पापा को, रॉजर की मम्मा और उसके पापा उन दोनों को कहीं जाना है बिजनेस के ट्रिप के लिए, एक ऑफिशियल ट्रिप थी। तो उन्होंने रॉजर की एक आंट है, उनका नाम है आंट बेटी, उन्हें बोला कि वो रॉजर का ख्याल रखें जब तक वो नहीं है उसके साथ। फिर Roger hadn't seen Aunt Betty since he was a baby, but he was very excited because she lived in the countryside. वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो कंट्री साइड में रहती थी। अब कंट्री साइड क्या होता है? A particular section of a country, especially a rural section. Next day, Roger packed the suitcase and his mother drove him to the station. He got on the train to Webley, and mother told him to be a good boy and have a nice time with Aunt Betty. She waved as the train pulled out of the station. अगले दिन ही रॉजर ने अपना बैग को पैक कर लिया और उसकी मम्मी ने उसे स्टेशन के लिए ड्रॉ अप कर लिया। ओके, फिर वो जैसे ट्रेन में गया विबली के लिए, जो आंट बेटी थी वो विबली में रहे, तो वो विबली के लिए गया तो मम्मा ने उसे बोल दिया, जैसे हमारी मम्मा भी कहते हैं तो हम किसी के घर जाते तो शैतानी मत करना, अच्छे बच्चे बन के रहना, वही बोला। फिर और अ नाइस टाइम, अच्छा समय गुजारना आंट बेटी के साथ। और फिर उन्होंने से बाय बाय कर दिया जैसे ही ट्रेन चली गई। Okay, next. Train seemed to take forever making its way through the countryside. It stopped at lots of little stations until Roger was the only one left in his compartment. Eventually, the car announced that they had arrived at Webley. ट्रेन ऐसा लगा उसे कि ट्रेन हमेशा के लिए चल रहा है कंट्री साइड के लिए, तो वो बहुत बार रुका। ट्रेन बहुत सारे स्टेशन में, छोटे छोटे स्टेशन में रुकता गया जब तक रॉजर, छोटा सा बच्चा, अकेले ना हो अपने कंपार्टमेंट में। फिर गार्ड ने फाइनली अनाउंस कर दिया कि वो विबली पहुंच गया। Roger took his bag and got off the train. An old lady with a round face and mass of curly hair was waiting at the station door. It was Aunt Betty. "You're a big boy now," she said to Roger. "You were a little baby the last time I saw you." तो रॉजर ने अपना बैग जो है वो निकाला ट्रेन से और उसको एक बूढ़ी औरत दिखी। उनका गोल फेस था, जिसमें ना ओवल फेस, उनका राउंड फेस था और उनके पास बहुत सारे कर्ली हेयर थे। ओके, मैसिव कर्ली हेयर, वाइट हेयर, और वो स्टेशन के डोर के पास वेट कर रही थी। वो थी आंट बेटी, वही आंट बेटी थी। वो आंट बेटी कहती कि तुम तो बड़े लड़के हो गए और रॉजर से, तुम बहुत ही छोटे बच्चे थे जब मैंने तुम्हें देखा। आखिरी बार they got into Aunt Betty's old-fashioned car and drove down a narrow winding lane, one after another until they stopped at a pretty big house in the middle of the village. "Welcome," said Aunt Betty, opening the door. Roger, wait a second, old-fashioned car. Old-fashioned car क्या होती है? Old-fashioned car जानना चाहते हो? See here. Old-fashioned
और एक्चुअली जो कार थी वो पिंक थी, इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैंने पहले भी करा हुआ था। रुको, मेरे को थोड़ा सा करना होगा स्टॉप अभी शेयरिंग को। या है सी, यही होता है पिंक क्लासिक का, यही होता है ओल्ड फैशन का। दिस इज that's nothing so old fashioned also no. I they they got into all अबे ओल्ड फैशन कार में वो लोग बैठ गए, छोटी सी, बहुत ही पतली सी, लाइक वाइंडिंग लेन में गए वो, और एक के बाद एक के बाद एक जाते गए। उस जब तक वो आंट बेटी के घर तक नहीं पहुंच गए, जो कि बिल्कुल विलेज के बीच में था। आंट बेटी ने बोला वेलकम और डोर खोल दिया रोशनी के लिए। पिंक हाउस तो सब जानते हैं, स्टिल मैं आपको शो कर, यही होता है पिंक हाउस। एक्चुअली रियल देखना था, रियल में देख लो। दिस इज अ पिंक हाउस बट स्मॉल, छोटा, उनका घर छोटा था, लाइक दिस। ये देख रहे हो, प्रिटी पिंक हाउस, ओल्ड फैशन कार। दिस इज लाइक द हाउस ऑफ Aunt Betty. Tiny cottage type house. Fine. ओके, यहाँ लिखते हैं behind the black door pink house. Pink house. Okay, got it. हमें मिल गया behind the black door का pink house. This you can see black door. Okay. But that's not the actual one. Yeah, this type was. Believe this. मैं इसको नहीं करना. Let's come up here. Old fashioned car. अर्न्ड बेटी ने रॉजर को एक ड्रिंक दिया और एक स्नैक दिया और उसे घर पूरा दिखा दिया। फिर घर के जो टॉप था, घर का टॉप, the top, the top of the house, at the top of the house और भी stairs थे और एक रूम था ब्लैक रूम। अर्न्ड बेटी का रूम रेड डोर था। आंटी Aunt Betty रेड डोर। एक्चुअली मैंने तो ये पूरा रीड कर लिया है, इसमें मैं आपको हिंट भी देती हूँ कि ये जो आंट बेटी है, इसी के घर में वो मॉन्स्टर है जो हमने पहले स्टार्टिंग में सुना। रॉजर का है ग्रीन डोर, देन मॉन्स्टर का जो डोर है दैट इज अ ब्लैक डोर। या ये आगे स्टोरी आगे पता लग जाएगी।
Okay. Alright, now Aunt Betty made Roger promise never to go in that room when Roger when he asked why, Aunt Betty told him that it was a very odd storage room full of cobwebs and spiders, and she didn't want them getting out in the rest of the house. उसने बोल दिया कि नहीं, वहां पर एक बहुत पुराना स्टोरेज का रूम है, उसमें कॉबवेब्स और स्पाइडर्स पड़े हैं, उन्हें चाहती कि उनके घर में आ जाए। ओके, अब आई है क्वेश्चन टाइम। हमने कंप्लीट किया है अभी जस्ट इतना। मेरे को ढंग से लाइन नहीं आ रही है अभी, और ये स्ट्रेट लाइन बनना ये वन सेकंड। हमने उतना कर लिया है अभी। What's happening like this? Thank God, highlighter का ऑप्शन नहीं हटा रहा। Okay, now it is the question time. Yeah, now it is the questionnaire time. So, let me ask you the questions. So, मैं यहाँ डाल रही हूँ। Question number 1. Why did Roger parents left him to Aunt Betty? Okay, first. Then second, how was Aunt Betty looking? ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, ना कि मेरे लिए। आप सब लोग मुझे कमेंट्स में आंसर दोगे, और अगर आपको आंसर पता नहीं है तो यू नीड टू जीमेल मी। और जो लोग मुझे जीमेल करेंगे, जो 5 ओनली 5 जो 5 पीपल मुझे फर्स्ट जीमेल करेंगे, उनका शाउट आउट होगा। Third, why did she take a promise from Roger to why did she take a promise from Roger? And for what? मैंने आप लोगों के लिए 3 इजी क्वेश्चंस दिए हैं, और ये जो पीडीएफ है, ये सेम पीडीएफ मैं आपको भेजूंगी भी, तो आप यहाँ अपना नीचे से रिप्लाई डाल सकते हो इस तरह। लाइक मान लो क्वेश्चन में कि वो पिंक, उनका house was pretty pink, ये आंसर नहीं है, but still
think पोस्ट सीधा पोस्ट कर देना, वापस से एडमिनिस्ट्रेटर में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने डिलीट इट। आप अपने नाम की तरह से डाल सकते हो, लाइक दिस। नथिंग इज देयर। आप पूरा चेक कर लेना, क्वेश्चंस 3 ही क्वेश्चंस है, ओनली 3 क्वेश्चंस। ओके, लेट्स गो अप ahead. Aunt Betty didn't have a television, so after a quick snack, she told Roger some old village stories. Roger was almost falling asleep when Aunt Betty suggested that he should go to bed. आंट बेटी के पास कोई टेलीविजन नहीं था, तो खाने के बाद वो रॉजर को पुरानी स्टोरीज बताई उन्होंने, और रॉजर को नींद आ गई। तो आंटी ने बोला उसकी की जाए, वो सो जाए। After a long exciting day, Roger quickly fell into a deep sleep, but he was startled by the sound of footsteps going upstairs, followed by the creaking of an opening door. Roger heard what sounded like a low groaning sound. He was a little scared, but quickly got back to sleep and had a dream that he was being chased through a forest by a black shadow. He awoke next morning and went downstairs to find Aunt Betty. She had made a delicious breakfast of cheese and tomatoes with homemade bread. He quickly forgot last night's dream. So एक्साइटिंग डे के बाद वो बहुत ही इजीली सो गया। फिर बट ही वाज स्टार्ट, उसे अजीब सा फील हुआ कि किस फुटस्टेप्स की आवाज कैसे आ रही है, वो भी अपस्टेयर्स से। डोर ओपन होने की भी आवाज आ रही है। तो रॉजर ने वो ये भी आवाज आई कि कोई ग्रूनिंग की साउंड। वो थोड़ा डर गया, बट वापस से वो सो गया। बट उसे वापस से एक बुरा सपना सा आया, लाइक अजीब सा सपना आया कि वो किसी बुरे ब्लैक शैडो के तरह थ्रू कोई ब्लैक शैडो उसका पीछा कर रहा है, लाइक ओके। He awoke next morning and went. ओके, तो ये भी पढ़ लिया हमने कि नीचे वो गया, उन्होंने आंट बेटी ने बहुत ही अच्छा डिलीशियस सा ब्रेकफास्ट बनाया था चीज से और टमेटो से, और उन्होंने होममेड ब्रेड भी यूज किया। फिर रॉजर भूल गया क्या हुआ कल रात को। फिर Aunt Betty told him that she was taking him to the village market. They went to grocers, the butchers, and the greengrocers. Okay, greengrocer, not greengrocer, greengrocers. अब आप सोच रहे होंगे greengrocer क्या होता है? ग्रोसर तो हर कोई जानता है। What is a grocer? Like grocer is this. Sorry, grocery store. Grocer. This is a grocer. And if you want to know more, go into a grocer is a shopkeeper who sells food such as flour, sugar, and tinned foods. Okay? Then greengrocer क्या होता है? Greengrocer. A greengrocer is a person who owns or operates a shop selling primary foods and vegetables. Okay? Like your fresh fruits, vegetables बेचते हैं, वो ग्रीन ग्रोसर्स कहलाते हैं। मंडी में जो लोग सब्जी वब्जी बेचते हैं, उन्हें हम ग्रीन ग्रोसर्स ही कहते हैं। Then butchers क्या होता है?
Bachos. Bachos. जो मीट बेचते हैं, okay? जो मीट देते हैं, they are known as bachos. Sorry for this. जो मीट देते हैं, they are known as bachos. Then, when they had finished shopping, Aunt Betty took Roger to see the village church. She explained that she arranged the flowers for the service every Sunday morning. Father Rupert, the priest, was inside the church. Okay, now one more question. One more question. Okay. What comments? Back. By mistake. Close off. Close off. जो question है first, who was Father Rupert? मैं बाद में एक और question याद करूँगी, आगे होते हैं question आ गया दिमाग में. What did Aunt Betty made for breakfast? Sorry, breakfast. It was मैंने breakfast कर दिया सर. Where did they go? Where did they go? Charon places. Right? Father Rupert, the priest, was inside the church putting up some posters. Aunt Betty and Father Rupert greeted each other, and the priest welcomed Roger to the church. He pointed out some beautiful stained glass windows and wood carvings. So ये stained क्या होता है? Stained glass windows, right? These are stained glass. Yeah. These are stained glass windows. बहुत सुंदर है. पर चर्च की जो होती है ये होती है चर्च stained glass windows. वुड कार्विंग्स तो मोस्ट लोगों को पता होगा. चर्च में वुड कार्विंग्स यूज होती हैं. ये होती है चर्च की वुड. ओके, ये तो सबको पता है. सबके यहाँ सोफे होते हैं. सोफे पे ऐसे जो कार्ड्स होते हैं ना, स्ट्रिप्स टाइप्स, जो भी उन्हें हम यही कहते हैं. ओके, जिस दिन भी मैं कहीं बाहर जाऊंगा ना, उस दिन का ब्लॉग में आपको पता लग जाएगा वुड कार्विंग्स क्या होता है. तो वुड कार्विंग्स के हिसाब का भी मेरे पास कोई हाथ में पड़ा हुआ चीज तो नहीं है. मेरे पास बॉक्स सारे में बहुत सुंदर बॉक्स है, but and wood carvings and invited Roger to attend the Sunday school, followed by juice and cakes on the church lawn. Then the priest said something strange to Aunt Betty.
but then we might have a problem with the monster in the village. Mr. Whitehead had lost some carrots from his garden. Mr. Lighthouse lost some turnips, and Mr. Redface lost his spinach. Okay? तो यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना, जो रूपक थे, फादर रूपक, वो पोस्टर्स लगा रहे थे ऑन बेटी ने फादर और फादर रूपक ने अपने आप को ग्रीट किया, एक दूसरे को ग्रीट किया, और फिर इसने रोशर को वेलकम किया। रोशर को उन्होंने वुड कार्विंग्स और स्टेन ग्लास विंडोज दिखाई, और उन्होंने रोशर को बोला कि वो संडे स्कूल है, जो कि जूस और केक देते हैं उस दिन चर्च लॉन पर। और फिर इसने कुछ अजीब सा कि शायद से मॉन्स्टर विलेज में मिस्टर व्हाइटहेड ने अपनी कुछ कैरेट्स लॉस्ट, मिस्टर लाइटहाउस अपने कुछ टर्निप्स लॉस्ट कर रहे, मिस्टर रेडफोर्ड लॉस्ट। One more question. Who lost their turnips and spinach? आपको मैं पीडीएफ भेज रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कोई भी चीटिंग भी कर सकता है। प्लीज गाइस, चीटिंग मत कर लेना। आप वीडियो चाहे 10 बार। Aunt Betty was a little bit annoyed at what the priest said. Surely you can't believe such a superstitious nonsense, she replied. Everyone knows there is no such thing as monsters. अभी मैं अभी आपको समझ ही पा रहे होंगे वो क्या छोटा छोटा चीज मैं बोल रही हूँ। Well, continued the priest, Dr. Williams told me one yesterday that he has been seeing a lot of children complaining of nightmares. Monsters are supposed to cause children to have nightmares. Please advise the priest for safety's sake, keep your windows and doors locked after the dark. Aunt Betty still didn't seem to believe the priest, but she agreed that she will lock her doors and windows at the night. Aunt Betty told Father Rupert that she had been at church by 7 on Sunday to arrange the flowers. Aunt Betty drove Roger home. They had sandwiches for lunch and spent afternoon walking in the woods. She pointed out all the different animals, plants, and birds to Roger. He thought she was very intelligent. That night, Roger woke again in the night. He heard the sound of a window opening, followed by that had seemed to the flapping of giant wings. Afraid but curious, Roger climbed out of the bed and walked over the window. He was shocked to see the outline of a great big ugly monster flying away from the house. Roger leaped back into the wet bed and put his head under the sheets. He tried to sleep but couldn't. Eventually, the light of the new day entered his room. He got up at 6:30 and went downstairs. Aunt Betty was already approaching. She said, "You look so pale. What's wrong?" Roger told her about what had seen and heard. "I will have a word with that priest who will think such sweet ideas in your head and giving you nightmares," said Aunt Betty. Roger didn't eat any breakfast. Aunt Betty was worried and drove him to
see Dr. Williams. Roger told Dr. William about the past 2 nights. Dr. Williams listened carefully. He advised Roger to have a quiet day indoors and leave Aunt Betty's home. Take before bedtime. These will give you a good night's sleep tomorrow and you will be completely alright. Dr. Williams reassured him. The Roger spent the day drawing and looking through Aunt Betty's old books and photo albums. He managed to eat a little and Aunt Betty gave him 2 of the tablets prescribed by Dr. Williams. Roger said good night to Auntie Betty and quickly fell into a long deep sleep. He awoke next morning to the sound of knocking at the door. Looking at the door, at the clock, he noticed that it was 8 o'clock. Aunt Betty was already at the church. Roger climbed out of the bed and went downstairs to open it. It was Dr. Burns. Roger explained that Aunt Betty was out. I know, said Dr. Williams. That's why I came. The doctor explained that he wanted to take a look at Aunt Betty's storage room. But I promised I wouldn't go there, said Roger. Don't worry, said Dr. Williams. I will take the responsibility, and if I'm wrong, Aunt Betty will never even know. Together they climbed the stairs to the black door. Dr. Williams opened the door slowly. Saw a huge, ugly monster sleeping on the floor. Suddenly, it lifted its head and turned it towards them and growled. Dr. Williams quickly shut the door and they ran downstairs. तो ये तक आपको समझ में भी आ गया होगा कि यहाँ पर ऑन्ट बेटी ने अपने घर में मॉन्स्टर को छुपाए रखा था, इसीलिए बच्चों को नाइटमेयर्स आ रहे थे, किसी के घर से कुछ ले जा रहा था मॉन्स्टर। तो फिर रॉजर ने ये सब जैसे ही डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी, ऐसे ठीक करने की कोशिश की। फिर डॉक्टर आ गया ऑन्ट बेटी के घर ब्लैक डोर को चेक करने। ब्लैक डोर में पड़ा था मॉन्स्टर जो सो रहा था। I thought there was a monster in the village. After so many vegetables started going missing from people's gardens, and lots of children came with me one night. After you told me about your dreams, I thought Aunt Betty might be involved. And when I arrived, I noticed how empty her garden has been this year. She normally went surprises for her vegetables. Together they waited until Aunt Betty returned from church. She was surprised to find Dr. Williams waiting with Roger. They told her what they had found in the room upstairs. Aunt Betty started crying. She admitted that she was keeping a monster in her house. She told them that she found it one day when she was walking in the woods. It had been flying in the monster land when there had been a bad storm. It lost its way and crashed on the Wibbly Woods and hurt its leg. Aunt Betty had taken it home to look after until its leg got better. While the monster was getting better, it had came to become Aunt Betty's friend. She told it country stories and told her all about Monsterland. She knew it was wrong to keep it and that it soon had to go back to Monsterland, but she didn't want to feel alone. Dr. Williams told her that Monster had to go back that day itself. They all went upstairs to the room with the black door. Aunt Betty went in while the other waited outside. After a while, the door opened. I have told him that he has to go back, said Aunt Betty.
They all went into the room, and Aunt Betty opened the window. The monster climbed out and started to fly away as they all waved goodbye. Just before he flew out of view, the monster turned and nodded his great ugly head. ओके सो आपको अभी ये बताती हूँ कि वो जो आंटी थी जो उन्होंने रखा था उसको इसलिए रखा उन्होंने क्योंकि वो मार्शल लैंड में रहता था वहां पर एक बाढ़ सी आई और वो उसके पैर में चोट लग गई आ गया तो उन्होंने उसको अपने घर पे रखा उसे संभाला जब तक उसका पैर ठीक नहीं हुआ फिर जैसे जैसे ठीक हुआ उसने वो जाने को भेज देती लेकिन उसे अकेला नहीं वो अकेले हो जाती वापस से करके उसने नहीं भेजा वो दोस्त बन गया और तो उनका उन्होंने उसे स्टोरीज वगैरह सुनाई ऐसे किया फिर डॉक्टर ने बोला कि उसे किसी ना किसी दिन तो जाना था तो वो आज जाएगा फिर आंट बेटी और बाकी गए ऊपर उन्होंने आंट बेटी ने बोल दिया मॉन्स्टर चला जाए आंट बाकी सब लोग गए आंट बेटी ने विंडो खोला मॉन्स्टर निकल गया वो फ्लाई हो गया बस जैसे ही उन्होंने गुड बाय वेव कर दिया उन्होंने उसने भी नॉडेड कर दिया ऐसे नॉड कर दिया दिस वाज अ स्टोरी फॉर टुडे इतना ही नहीं है अभी आगे ये भी है ये छोटी सी पोएम है The Sands of Dee Charles Kingsley ने लिखा है about the poet and poem Charles Kingsley ने लिखा है The Sands of Dee का poem Charles Kingsley, July 12, 1819 to January 23, 1875, was an English novelist. Kingsley wrote poetry and political articles, as well as several volumes of stories. As a novelist, his sheer power lay in his descriptive skills. He published several novels about social problems before writing the very successful historical novels like Hypatia, Westward Ho, and Hereward the Pigs. The Sands of Dee is a poem about a girl called Mary who goes to find her cattle and lost in the fog gets lost in the forest. She never returns. In fact, she's found drowned and is caught in the sunless. This is the small poem. There was more. I think I have not taken the image. I will read that out, or I'm having the image also. Yeah, it's more. I missed it off. मैंने image लेना image भूल गई मैं. Yeah, image लेना भूल गई मैं ये रहा. और दो भी हैं. तो पहले हम read करते हैं मैं आपको पूरा भी दिखा. Oh Mary, go and call the cattle home. And call the cattle home. And call the cattle home. Across the sands of Dee, the western wind is wild and dank with foam. And all alone winch. The western tide crept up along the sand and o'er the sand, and round the sun as far as the eye could see. The rolling mist came down and hit the land, and never home came. Oh, it's sweet fish are floating here.
a twist of golden hair, a drone maiden's hair above the nets at sea. Was never someone yet that shone so fair among the stakes on deep. They rode her in across the rolling foam, the cruel crawling foam, the cruel hungry foam, to her grave beside the sea. But still the boatmen hear her call the cattle home across the sands of the समझ में आया? उसके पेरेंट्स मैरी को उसके पेरेंट्स ने बोला कि जाओ कैटल को घर लेकर आ जाओ, कैटल को घर लेकर आ जाओ और कैटल को घर लेकर आ जाओ। वो सैंड्स ऑफ डी के पीछे जा चुकी है। फिर पूरा बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी वो, और वो अकेली गई। Then the western tide crept up along sand and over and over and over. Sand or round हुआ sand. Then as far जितना दूर वो देख सकती थी देखा, but still वो दब गई और वो वापस नहीं आ पाई। फिर वहां पर कुछ बोटमैन्स ने उसे देखा कि उसके बाल कहाँ से अटके हुए हैं, तो वो गए उसने निकाल लिए और ऐसे क्रूअल फोम के ऊपर रख दिया उसने, ऐसे उन्होंने। फिर अभी भी बोटमैन को जो है वो आवाजें आती हैं कि वो मैरी कैटल को वापस बुला रही है। I will show you the full ones. One second. The sounds from the I'm going to copy this image. यहाँ पर one second, अभी नहीं होगा। I need to copy it and paste it another way. Let's leave it here. Oh, Mary, go and call the garden home and go and call it. अब यहाँ से देख लो, मैं यही इमेज यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ वापस से, एंड आपको मैं भेज भी दूंगी एक तरीके से। ओके ओके, नेक्स्ट इसी वीडियो के पार्ट टू में हम करेंगे दूसरा। पार्ट टू में हम करेंगे न्यू टॉपिक, लाइक न्यू टॉपिक तो नहीं लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जिसके पीडीएफ्स मेरे पास भी हैं। ओके गाइस, टिल देन बाय बाय, टाटा। अरे अच्छा